Hello children. So now in the last video, this is where we had ended the video. So the class is created. Class student. Student is the name of the class. Int roll number. Char name. These are called as the data members, which are private. I told you private is the by default access specifier. All right. So this private members is the example of data hiding. Public. There are two member functions in the public section, set data and get data. And we have defined both of them inside the class. In the last video, we saw that there are two ways in which the functions are defined. One is inside and one is outside the class. Is the class. Set data, we are just asking for the roll number. C in roll number. You can also add a line here, C out, enter your roll number. Get data, we are displaying the roll number and the name. This is the structure of the class. As I told you last time also, of a set. There is no main function here. The C++ program starts with main and ends with main. That is the concept or the approach of a C++ program is called as bottom-up approach. If you remember the points that we had covered when we had started with the introduction of OOPS, we said that the execution program is top-down approach and the OOPS so program, it first goes to the bottom of the program where it is written main. And then it are two concepts that we have talked about and which are the backbone of OOPS concept. Data encapsulation. Backbone structure, how the class closing of the curly brace and terminating it with a semicolon. Okay. Now the again here again one more program. So more and more programs, children, I'm showing you for class so that you understand how a class is created. Here see class, again the name of the class is student. Char name, here we are asking the age of the student. Now this is an example where both my member functions are defined outside the class. Here the member functions are inside the class. If you see that under public, I am writing down the name of the function and giving the definition. I'm writing down the name of the function and writing down the function body inside the class. This is the termination of the class. I am inside the class. And in this slide, I have just declared the functions public. The data members are private. Member functions are public. I have terminated my class. Terminated here. Okay. और class के बाहर I am defining the function. So I gave you an example that if you are
roaming outside your classroom, you will be asked from which class are you. Similarly here, we say void. First, the name of the class that you belong. This is the belonging symbol, which is called as scope resolution operator. Name of the function. So my function is enter name, enter age. Also notice one thing, that name and age are private members of the class which can be accessed only and only by the public members of the same class. Now these name and age, last slide में इनको हमने hidden data बोला है. So this hidden data can only be accessed by the functions of its own class. That is why we say that private data cannot travel outside. Cannot ask this name and age if I go outside the class from the function which does not belong to the class. Okay? And in this put data, I have displayed the name and age. This is what we did in the last video. Again, this is a repetition of the examples of what we did in the last video, where we are defining the class. Next is the concept here. Now, once we define the class, what after the class? The class has been defined. The private members cannot go outside the class. The private members are accessed only by the functions, member functions of the same class, which are public. But the public members can be accessed outside the class. So public members को class के बाहर हम लोग how are we going to access is with the help of what is called as objects. An object is a runtime entity of a class, children. It's an instance of a class. और जब हम क्लास को हम मेन एग्जीक्यूट करते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है if we have creation. Now when we create the objects of the class, children, just keep in mind how do we declare a normal variable. एक built in variable को हम कैसे declare करते हैं? Int a. Keep this statement in mind. What is int? It is the data type of the variable a, which is telling me that a is a variable which is going to accept or which can accept only the data of type int. ठीक है? तो यहाँ पे we will create object as a variable and the data type is going to be of the class type. ठीक है? ये दिमाग में रखना है आपने. Let us see an example here. Class box. What is the name of the class? Box. Private data members है, public member functions है. ये पूरा जो pink box है, this is a class. ठीक है? Now of this class, I have created so many objects. B1, B2, B3. Box B1. I told you, compare it with the statement int a. Box B1. So here B1 is equivalent to a and box is equivalent to int. Equivalent does not mean in the sense कि वो int variable लेगा तो box भी int बनाएगा उसको. No. Equivalent in the sense of the position. तो int की जो position है that is of a data type. तो यहाँ पे box means it is a data type of the variable जिसका नाम है object. So this is an instance of a class. यहाँ पे box जो है that is a user defined data type
and B1 जो है that is a variable whose data type is class. ठीक है. So when I am defining a user defined data type, I'm trying to make it at par with the built-in data type. That means जो built-in data type कर सकता है वैसे ही चीजें my user defined data type भी कर सकता है. This is what I'm trying to do here. ठीक है. So the syntax of an object will be class name, space, and name of the object. You can have multiple objects from the same class. This is the example for that. Okay. Again, another example which shows us that a multiple objects has been created. तो यहाँ पे क्लास लिया हुआ है कार, वेरिएबल है उसका कलर, मेथड या फंक्शन है उसका ड्राइव. अब ऑब्जेक्ट 1 भी ड्राइव को एक्सेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी ड्राइव को एक्सेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट 3 भी ड्राइव को एक्सेस कर रहा है. आर यू noting down that they can only, all these objects are accessing only the functions? I have not put any arrow towards the variable. Why? Because the data member or the variable is private, and private member cannot be accessed outside the class. This line has to be stored somewhere in your brain when you are doing this C++ program, children, कि private member class के बाहर नहीं जाएगा. ठीक है. Only this public member will be accessed. And if you see, ये जो arrows हम लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे method तक limited है. I cannot take these arrows to the variables. ठीक है. Because the variables are private and my method or my functions are made public. So again, remember the public members of a class, which are the member private members, data members cannot be accessed. Okay. Now here is a full-fledged program which shows us the execution. Now this program, if you write down, it will be executed. ठीक है, क्योंकि इसमें main है. तो अभी हम देखें. The name of the class is sum. What are its data members? ABC. Children, the syntax is private colon and then the name of the data members. उसको आप same line में लिखो या next line में लिखो, will not make a difference. Colon should be present. ठीक है. तो ABC are my data members, public, और उसके नीचे हमारा है definition of the member function. और उस definition, उस member function में I am asking the variables and I am printing the sum of the data members. So I have A, B, C as 3 private data members and one function as add, which is public. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके accordingly हम सिर्फ add को access कर सकते हैं. Why? Because that is public. I cannot access ABC. Why? Because they are private. One answer for all the questions. Okay. My class gets terminated here. I start with my main. Main में I have created a function. Oh, sorry, I have created an object. See how the object has been created. Sum S. और पीछे example हमने क्या लिया था? Box B1. Name of the class followed by the name of the object. ठीक है. तो यहाँ पे object क्या है? हमारा instance हमने क्या बनाया है? S. Now through this object S, I am accessing my
public member function add with the help of this dot operator. This is how I will access my public data, my public members. Data members हो या फिर member functions हो. But हमने ये पहली क्लास में we learned that हम लोग member functions को ही public करते हैं. Data members या variables को public नहीं करते हैं. Because हमारा first slide याद रखो, the first slide was data hiding. If we make A, B, C also public, हमारा data hiding जो है वो concept zero हो जाएगा, because यहाँ फिर मैं S के साथ S dot A भी कर सकती हूँ, S dot B भी कर सकती हूँ, फिर मेरा variables भी बाहर access हो रहे हैं, तो फिर हमारे को oops concept की जरूरत ही नहीं है. फिर तो हमारी traditional programming में भी ऐसे ही होता था. We were accessing the variables from wherever we want to. Here we have to keep in mind the concept of hiding the data from the outside world. अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो इस प्रोग्राम में बॉटम अप अप्रोच है. तो बॉटम में वो रीड कर रहा है सम एस. उसने एस एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू मेरा ऐड फंक्शन एक्सेस हो रहा है. तो सम को वो ढूंढने जाएगा कहाँ पे, सॉरी एस को कहाँ ढूंढने जाएगा, सम में. तो सम है मेरा यहाँ पे द क्लास. सो इट विल क्रिएट in the class, it will do all these things. Hence the bottom up approach. This is a simplest program of a class that can be given, which can also be considered as an example of encapsulation. जहाँ पे ABC encapsulated है, वो add में आ रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, हम add को access कर रहे हैं. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन. इनकैप्सुलेटेड है, देखो हम ऐड को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास जो जहां ऐड बिलोंग करता है. लेकिन ऐड के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. आई कैन नॉट चेंज द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास क्योंकि मैं बाहर से उनको एक्सेस ही नहीं कर सकती हूँ. ऐड को एक्सेस करूंगी तो ही मुझे वो वेरिएबल्स एक्सेस होंगे. इट विल आस्क मी टू एंटर द नंबर्स. ठीक है. तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ वी यूज द डेटा मेंबर्स एंड हाउ आई कैन क्रिएट अ मेंबर फंक्शन. इस मेंबर फंक्शन को आप दो मेंबर फंक्शन में भी डिवाइड कर सकते हो. एक मेंबर फंक्शन एडिंग ऑफ द डेटा होगा, asking for the data होगा, दूसरा member function होगा to print the addition. So it is okay, you can do it in one member function also. ठीक है. See this slide, understand the program written in this slide, and the output is nothing new. We have been doing this output since the last year also, asking two numbers, adding them. But look at the transition with the way that we used to do and now how we are doing it. Okay. The next, another example where we are creating an object. Class का नाम add है. Publicly, I have created one member function as sum, और उसमें दो वेरिएबल्स को हम पास कर रहे हैं और क्लास खत्म कर दी हमने. ठीक है. outside the class I am defining the function int a and int b. Children, now these are not data members because they don't belong to the class, they only belong to the function, hence they are called as local variables. A and b are the variables which can be used only by the function sum.
S is another variable, another local variable which can be used by the function sum. तो A और B की वैल्यूज जो है हम नीचे से पास करेंगे. ओके. Sum is equal to A plus B, C out sum and S. This is the definition of the member function add. Sorry, member function sum. यहाँ पे क्लास का नाम है. अभी हम आगे अपने मेन में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. सो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है OB1. दिस इज जस्ट लाइक अ नेम ऑफ अ वेरिएबल चिल्ड्रन. जैसे हम लोग int a, int num, तो OB1 इट्स अ नेम गिवन बाय द यूजर. Add OB1. Add is the name of the class. Add OB1 object of the class has been created. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के थ्रू I am accessing the public member of the class as sum. पर पब्लिक मेंबर का प्रोटोटाइप क्या है कि मुझे दो वैल्यूज भी उसको भेजनी है, int. So I am sending these two values 6 and 8. तो 6 कहाँ जाएगी, A में, 8 कहाँ जाएगा, B में. और A और B को ऐड करके क्या आउटपुट आएगा, S. और ये सारा एडिशन किस में है, सम में. सम को मैं किससे एक्सेस कर रही हूँ, OB1 से. सो OB1 में प्रिंट भी है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 14. बिकॉज सी आउट स्टेटमेंट सिर्फ ये है. Here again have a look at this program, children. Understand the creation of the public member sum with arguments. Last example was member function without arguments. Clear? Where I have given you an example where my data members are public में int है, string है और float, सब public, private नहीं है. क्लास में प्राइवेट मेंबर्स नहीं बनाए हैं, only the public members have been created, int, string, float. So when I create data members as public, see what I can do in main is class का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया std. उस std की हेल्प से मैं रोल नंबर की वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ, नेम भी चेंज कर सकती हूँ, परसेंटेज भी चेंज कर सकती हूँ, और उसको वहीं के वहीं प्रिंट भी कर सकते हैं. हम लोग बाहर सब कुछ function of data hiding and data encapsulation. Because हम डेटा मेंबर्स को बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ भी encapsulated है ही नहीं है. So note that has been word public in the program is written for the data members, so they can be accessed from anywhere, which is not the concept of data hiding. हमें याद रखना है that my data hiding is one of the rule, we can say that my oops program should follow, और यहाँ पे वो follow ही नहीं हो रहा है. तो अगर हम अपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट नहीं करेंगे, पब्लिक करेंगे, तो ऐसे उनको हम यूज कर सकते हैं. बट इन दिस प्रोग्राम इफ आई राइट डाउन, इसमें तो प्राइवेट है ही नहीं मेंबर हमारा. इन दिस प्रोग्राम इफ आई राइट डाउन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, s. इफ आई राइट डाउन s डॉट a is equal to 0, it will give me the error access denied. Why has the access been denied? Because my A
जो मेरा मेंबर है वो प्राइवेट है. I cannot access it outside the class. This is what we mean by the word accessing outside the class. ठीक है. So children, this concept of creating the class, creating an object of the class to access only the public members is the basic pillar of doing all the further concepts in OOPS and all the further study of OOPS. And this is the difference between a class and an object. Class एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग बाइंड करके रखते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स एन इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइंडिंग, दैट क्लास का बाइंड है. क्लास एक कॉन्सेप्चुअल चीज है चिल्ड्रन. हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें उसको बाइंड करके रखा है, और उसको एक्चुअली हम एक उसके इंस्टेंस के साथ यूज करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट. सो दैट इज रियल. क्लास के लिए अलग से नो मेमोरी इज बीइंग एलोकेटेड, बट फॉर ऑब्जेक्ट मेमोरी लगती है. आप इंट ए लिखते हो तो ए वेरिएबल है, जितनी इंटीजर 2 बाइट्स इंटीजर को होना चाहिए उतनी ए को वैल्यू मेमोरी मिलती है. सिमिलरली हियर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट होगी प्रॉपरली. और क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग लिख सकते हैं. हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वी कैन क्रिएट इट विदाउट अ क्लास, विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. पर ऑब्जेक्ट को हम विदाउट क्लास कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्लास है. तो आप कोई डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो जब तक उसका आप कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हो until you define the data type of that variable. ठीक है. And every object has its own value associated with the fields. Class तो एक structure है जिसमें हम लोग functions और data members को bind कर रहे हैं, तो उसकी कोई value नहीं होती है. Object के through हम लोग value देते हैं उसको. So this is an important and an easy way to understand the difference between class and object. हालांकि both of them are interrelated. क्लास को आप ऑब्जेक्ट के बिना एक्सेस नहीं कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट को आप क्लास के बिना, ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ क्लास, बट क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट. इट कैन एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है क्लास के बिना. ठीक है. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स are discussed here in quite details in these 2 videos, children. Uske baad now we'll start further concepts of OOPS, which will have both these concepts of class and object. So thoroughly इनको आपने understand करना है. Thank you, children.